Welcome students, I welcome you all in Northeast PSC. In our today's topic, we are going to discuss about the difference between the national parks, the wildlife sanctuary and the biosphere reserves. So the very first parameter, it is the protection type. Okay, protection type means आपका कौन सी चीज किस किस के अंडर में प्रोटेक्ट की जाती है. So your national park protects the wildlife. They only protect आपके जंगल, जो आपके जंगली जीव होते हैं बेसिकली उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं. ओके. Second, we have they protect the plants and animals both. The wildlife sanctuary protects the plants and animals both. Whereas the biosphere reserves ये आपके हर तरह के लाइफ फॉर्म को जो है वो सपोर्ट करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है. Okay, every type of line for your life form. Second, we have students that is a legislation means किसके कंट्रोल में आपका ये आता है, किसके लेजिस्लेशन के अंडर में आपकी चीजें आती हैं. ओके, हियर वी हैव दैट इज द नेशनल पार्क्स कम अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ये किसके अंदर में आते हैं, आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आते हैं. सेम गोज विद द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो. बट द बायोस्फीयर रिजर्व बच्चे वो किसके अंडर में आते हैं आपके, दैट इज द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर, दैट इज मैब. मैन एंड बायोस्फीयर यूनेस्को ने जो आपका स्टार्ट किया था, मैन एंड बायोस्फीयर, उसके अंडर में आपके आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, देन वी हैव इज द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, किस लेवल तक की प्रोटेक्शन इसमें की जाती है. तो स्टूडेंट्स जस्ट अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज दी सबसे ज्यादा आपकी जो प्रोटेक्शन की जाती है दैट इज इन दी नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क्स आपके हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं. सबसे ज्यादा आपका डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो होता है दैट इज इन द नेशनल पार्क्स. देन कम्स टू दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन कम्स टू द बायोस्फीयर रिजर्व्स. ओके, इस तरीके से आपका है. दिस इज द हाईएस्ट एंड दैट्स इन सच अ वे. देन वी हैव द रेगुलेशंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कि ह्यूमन एक्टिविटीज कितनी कितनी अलाउ है आपके इन सब एरियाज में. ओके, सो इन योर नेशनल पार्क एक्टिविटीज कौन सी अलाउ है आपकी, ग्रेजिंग, hunting, forestry, cultivations only to the restricted areas are strictly prohibited. ये सारे की सारी आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, आपका चारा चलना, आपका हंट करना, शिकार करना, फॉरेस्ट्री करना और आपका खेती बाड़ी करना, ये सब कुछ क्या है आपके स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. सबसे ज्यादा बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इज देयर, सो विल दे अलाउ यू टू प्रैक्टिस सच एक्टिविटीज? डेफिनेटली दे विल नॉट अलाउ, राइट. तो किसी भी टाइप का आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस इज नॉट अलाउ इन दिस एरिया. सेकेंड, वी हैव योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर आपका लिमिटेड तरीके से आपकी कुछ चीजें अलाउ होती हैं. एक लिमिटेड, ओके, द इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज लिमिटेड. हियर वी हैव दैट इज अ नो इंटरफेरेंस एक्सेप्ट इन द बफर एंड द ट्रांजिशनल जोन. यहाँ पे आप हर तरह के काम कर सकते हो बायोस्फीयर रिजर्व में. बेसिकली कौन सी कम्युनिटी बच्चे, एसटी कम्युनिटी. ओके, द ट्राइबल कम्युनिटीज ओनली. ये नहीं कि आप जाके वहां जाके आप चाहते हो कि आप ग्रेजिंग करो, फॉरेस्ट्री, हंटिंग करो, नहीं. ओनली द ट्राइबल कम्युनिटीज आर अलाउड देयर. ओके, नॉट द पीपल ऑफ एनी अदर कम्युनिटी. Then we have what are the boundaries of these areas. Okay, now boundaries आपके कौन आपका इनको डिलिमिटेट करता है, ठीक है, डिलाइनेट करता है, कौन करता है इसको. ओके, कमिंग टू द वेरी फर्स्ट बच्चे, अगेन लेजिस्लेशन. जो आपका लेजिस्लेशन होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इनकी बाउंड्रीज सेट की गई है आपके नेशनल पार्क्स की. ओके, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. सेकेंड, वी हैव इनकी कोई बाउंड्री एज सच डेलिनेट नहीं की गई है स्टूडेंट्स. ओके, there has been no such delineation of the wildlife sanctuary. Okay, the boundaries of the wildlife sanctuary. Again, the biosphere reserves की आपके एक तरीके से फिर से प्रॉपरली तरीके से आपका डेलिनेट किया. डेलिनेट का मतलब होता है बताना कि आपकी बाउंड्री कितनी से कितनी होनी चाहिए, इतना आपका होना चाहिए एरिया, ज्यादा बड़ा होना चाहिए. दैट इज अ डेलिनेशन. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव द अदर वन, दैट इज द अपग्रेडेशन एंड द डाउनग्रेडेशन. ओके, क्या होता है आपका इसके अंदर में, दैट इज अ कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जो आपके नेशनल पार्क है, यू कैन नॉट कन्वर्ट अ नेशनल पार्क इनटू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, यू कैन नॉट डाउनग्रेड देम. ओके, आपका ऑलरेडी बच्चे नेशनल पार्क इज द highly restricted area. So how can you convert a highly restricted area into a limited restricted area, right? So you cannot convert a national park into a wildlife sanctuary. Okay, but a wildlife sanctuary can be upgraded to a national park. Okay, can be upgraded to a wildlife sanctuary. Second one, and then we have the national parks and wildlife sanctuary may become a part of a biosphere reserve. आपका जो national park है और जो wildlife sanctuary है, both of them are a part of your biosphere reserve. I will show that later. Don't worry. The next and the last but not the least students, we have the IUCN. Okay, IUCN status क्या है इनका? So जो आपके national parks है, they come under the category 2 of the protected areas. They come in the category 2 of the protected areas. That is very important for the examination point of view कि आपके कौन सी चीजें कौन सी category में आती हैं. Second, your wildlife sanctuary come under the category 4, category 2, category 4. Okay, and then here we have that is a roughly corresponds to the IUCN category 5. 2, 4, and it comes under the fifth category of IUCN. Okay.
Now just let me show you one simple diagram, students. For example, this is a biosphere reserve. Okay. Then here we have is a wildlife sanctuary and here we have is a national park. It is like this. Okay. Your national park, your wildlife sanctuary and your biosphere reserve. So this entire area is the biosphere reserve. Under that we have the wildlife sanctuary and under that we have the national park, that is the highly restricted areas. Okay. These are the highly restricted areas where the human activities, the human interference are not at all allowed. They all are prohibited. Okay. Thank you so much, students, for being connected with Northeast PSC. Hope you understand the difference between the National Park, Wildlife Sanctuary, and Biosphere Reserve. We'll again come up with the same kind of questions and the same kind of series. Thank you.